Hello students, welcome back to our channel. Continuing with the chapter. This is the third part of this chapter. It is a very long chapter, I know, but yeah, we'll explain, we'll read every particular line of this chapter. Hope you are doing the homework which I am giving you and your teachers also giving you. So we have done uh, 30 to 40% of this chapter microorganisms friend and foe. So I'll just revise it out. We have done microorganisms, we have understood what are microorganisms, then we discussed about the broad areas in which the microorganisms are divided, like bacteria, fungi, protozoa, algae, and one more is that virus, the specific and special feature of virus. Then we have seen some uh, pictures of bacteria, like of bacteria, algae, protozoa, fungi, and even viruses too. Then we studied where do microorganisms live. Then we have discussed how do they live and what is the relation between microorganism and us, and how the microorganisms are friendly to us. Okay, then we have discussed how to make where are and why are microorganisms are used in production of curd, bread, alcohol. uh, then uh, then we have discussed about the process fermentation. Then their usage, like the first use was commercial use, how they are commercially reproduced, how they are commercially used, how they are used in major factories for commercial purposes, how they are medicinal usage of microorganisms on some scientists like Alexander Fleming and Louis Pasteur. You have to learn these names and these inventories, and then I have given a homework to you. uh, Hope you have done the homework. If you have not, that is your loss, babes. Okay, then that we have learned about a main and a border area, that is vaccine के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, how the vaccines are produced and why to use vaccines, some differences between vaccines and antibiotics. Then we have completed how vaccines are used and everything, blah blah. Then now, we'll start with increasing soil fertility. Now, what is soil fertility? Some bacteria are able to fix nitrogen. I'm here. Please open your book, page number 21. Some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil for nitrogen and increases fertility. क्या करता है नाइट्रोजन अपने environment में बहुत मात्रा में प्रेजेंट है, तो कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं, लाइक लाइटनिंग होती है या फिर सीडोमोनास बैक्टीरिया जो होता है, वो नाइट्रोजन जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है उसको सीधा लाकर सॉइल में टेक देता है, सॉइल में लेकर आ जाता है। और सॉइल में लेकर आने से क्या मतलब, सॉइल अगर सॉइल को नाइट्रोजन मिलेगी तो उससे क्या होगा, उसके अंदर सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, उसमें सॉइल रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, सॉइल की कंटेंट एनरिच होगा। ठीक है, so these microbes are commonly called biological nitrogen fixer, और इनको commonly अपन कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स, क्योंकि ये नाइट्रोजन को एयर से सॉइल में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, सो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं, ये ब्लू ग्रीन कलर के उनको कहा जाता है, ये नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, हाउ microorganisms cleans the environment. Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure. Bujo and Paheli are two friends, two classmates. उन्होंने देखा कि उनके जो स्कूल का गार्डनर है वो मैन्योर बना रहा है। मैन्योर, व्हाट इज मैन्योर? जो खाद, व्हाट डू वी से इन हिंदी? खाद, फर्टिलाइजर। मतलब
not made up of chemically made with cow dung and etc things. Along with their friends, they collected waste of plant. उन्होंने क्या करा, प्लांट का जितना भी वेस्ट होता है, अब वेस्ट ऑफ प्लांट मतलब कोई प्लांट मर गया या किसी प्लांट की लीव्स फेल डाउन हो गई तो सारी लीव्स एंड कोई मरा हुआ प्लांट, उन सबको इकट्ठा करके वेस्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेबल्स का वेस्ट, फ्रूट्स का वेस्ट, नियर बाय हाउसेस एंड गार्डन्स उनके जितना भी वेस्ट था जो बायोडिग्रेडेबल है, उन सब को इन्होंने एक पिट, एक जगह पे वेस्ट डिस्पोजल में रख दिया. आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोजेस और कुछ दिनों के बाद वो जो जगह थी उसमें उस उधर की सॉइल ने उन सारे को डिकम्पोज कर दिया, वो सब गायब हो गए, वो सब खत्म हो गए एंड गॉट कन्वर्टेड टू मेन्योर, और वो सब चीजें मेन्योर बन गए, वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल हो गई. बूजो एंड पायली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. उन्होंने देखा ये कैसे हुआ, हाउ दिस हैपेंड, इतना हमने सब सामान, इतना सब कचरा वगैरह सब रखा, हाउ दिस हैपेंड, हाउ दिस इज कन्वर्टेड एंड डिकम्पोज. सो let's read. Do you take two pots and fill each other half with soil? दो pots लेना है, उनको half fill कर देना. Mark A them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags. एक में आप plant waste डालेंगे like leaves, or you can use vegetable pills, like you can use your fruit waste, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड एक कैन पॉट ए में आप ये डालेंगे मिट्टी के साथ, एंड पॉट बी में आप प्लास्टिक की पॉलिथिन्स डालेंगे, प्लास्टिक टॉयज डालेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन आप उनको 4-5 1 महीने तक उसमें आप यू कैन बो देम, और यू कैन आप 4-5 हफ्ते तक उनको छेड़ेंगे, लेफ्ट देम असाइड. एंड देन आफ्टर 4 3 4 weeks what you will see, do you find any difference in the content of the two pods? If so, what is the difference? अगर आपने कोई difference देखा है तो वो क्या होगा? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. जो plant pot A में हमने plant waste डाला है वो सब खत्म हो गया, वो सारा decompose हो गया. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. अंदर जो microorganisms present है, microbes जो present है, उन सब ने उस सारे को डिकम्पोज कर दिया, और उसको डिकम्पोज करके the nutrients released in the process can be used for plants again. और वो जो nutrients release हुए वो plants के लिए usage में आ सकते हैं, क्योंकि वो soil में present और soil में plants grow कर सकते हैं. और pot B में क्या हुआ, pot A का तो अपन को पता चल गया. pot B में जब polythene bags, empty glasses, bottle, broken toy parts did not undergo any change, उनके अंदर कोई change नहीं, जैसे थे वैसे वापस बाहर आ गए. The microbe could not act on them and convert them into manure. उनको मैन्योर में बदल नहीं पाए. Why? You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आप you you can see वो कुछ डिकम्पोज हुआ नहीं, लेकिन अब अपन आगे हैं. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल और उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कुछ आपने प्लांट्स, मरे हुए प्लांट्स देखे होंगे, कुछ लीव्स जो फॉल ऑफ हो चुके हैं, कुछ एनिमल्स जो मर चुके हैं, उन सबको आपने देखा होगा. इवन ह्यूमन बीइंग्स जो डेड हैं, जो मर जाते हैं, वो सारा आपने you have faced them, yeah. So animals on the ground, आपने कहीं रोड पे पड़ा हुआ कोई एनिमल लाइक अ डॉग हु इज डेड, आपने रोड पे देखा हो, हाईवेज पे देखा हो. ठीक है, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, और वो कुछ टाइम के बाद लाइक आफ्टर अ मंथ वी से कि वो वहां पे हम नहीं प्रेजेंट है, वो कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं, मतलब उनको नया साइड करा गया, चलो साइड कर दिया, रोड पे पड़े तो साइड कर दिया, वो साइड पे भी नहीं है, कहाँ गया आई डोंट नो what happened. So you find that they disappear after some time. This is because of the microorganisms. और ये काम कौन करता है, microorganism. वो पूरा के पूरा decompose कर देता है dead organic waste of plants and animals and convert them into simple substances. These substances are once again
used as other plants and animals, और उनको other plants manure बनाने के लिए हर जगह काम आ जाता है. Thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment, और environment को clean रखने के लिए काम आता है. Now the major topic comes that अभी अपन ने पढ़ा कि how microorganisms are useful to us. Now on the other hand, how microorganisms are harmful to us, कैसे हमारे लिए नुकसान है. Let's study about that. Microorganisms are harmful in many ways. जितनी वेज उनको, जितने वेज उसके अच्छे हैं उतनी वेज वो हार्म भी कर सकते हैं. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Animals, plants, human beings इन सब में बहुत सारी diseases cause करता है. Some diseases we have discussed in the introduction of this chapter. Let's briefly discuss now. Such disease causing microorganisms are called pathogens. जो microorganisms डिजीज कॉज करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है. व्हाट डू वी से? पैथोजेंस. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड अ लेदर. लेदर को खराब कर देते हैं कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ क्लोथ्स को या फिर कुछ फूड आइटम्स को. अपन फूड आइटम्स ज्यादा क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो इस पर अटैक कर देते हैं और खराब कर देते हैं. अंडरस्टूड? Let us study more about them harmful activities. Disease causing microorganisms in humans. अब अपन फर्स्ट बात करेंगे humans में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है, उसमें क्या डिजीज हो सकती है. सो पैथोजेंस, यू नो ऑल, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी. पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं. कहाँ से एंटर होंगे? जहाँ से अपन सांस लेते, द एयर वी ब्रीथ, या फिर हम जो पानी पीते, द वाटर वी ड्रिंक, और द फूड वी ईट, जो अपन खाना खाते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आप आ रहे हो, लाइक if a person suffering from chicken pox, and if you touches them, if he touches you, then you will also get a infection of chicken pox. Okay, so infected persons अगर आप direct contact में आ रहे हो, or by animal, like I'll say, yeah, if a normal mosquito is making a way from one person to another, if one person has chicken pox, then the he will the mosquito will touch that person, and unfortunately that mosquito also touches you, and but by through which also diseases are caused. And so, microbial diseases that can spread from infected person to a healthy person. जो diseases एक infected person, एक बीमार जने से दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है healthy person के, किससे? air, water, food और physical contact, तो उसको बोला जाता है communicable diseases. ठीक है? Example of such diseases are, अब इसके example क्या? Cholera, कॉमन कोल्ड. आपको बुखार है, आपके पास अगर कोई सो रहा है, आपने उस पर अगर स्नीज कर दिया तो आपको उसको भी बुखार हो जाएगा. चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस. ओके, दीज आर द सम डिसीजेस. व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, अगर आपका पास कोई इंसान बैठा है, आपका भाई बैठा है, या आपकी बहन बैठी है, या आपके फादर बैठे हैं, एनीवन जो आपके सामने आपके साथ स्नीज करता है, कुछ फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर उसके जो होते हैं अपनी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, उस फाइन मॉलिक्यूल और फाइन मॉइस्ट के अंदर thousands ऑफ वायरसेस होते हैं, और वो वायरसेस अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं और अपनी इन्फेक्शन अपन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. So how pathogen works. Okay, there are some insects and animals which act as a carrier. कुछ insects और कुछ animals जो carrier के form में work करते हैं. अब you'll say what is carrier? Carrier of disease causing microbes. वो क्या करते हैं? एक जन से दूसरे जन तक disease पहुंचाने का काम करते हैं. I have discussed previously. Housefly is one such example. Like housefly अपन देखते हैं वो एक जगह से दूसरी गंदी जगह से अपने ऊपर आ सकती है और अपने पे डिजीज फैला
फैला सकती है। The flies sit on the garbage and animal etc and pathogens stick to their bodies. Pathogens जो होता है वो उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाता है, and when they flies uncovered food may they transfer the pathogens. कोई uncovered food पे भिन भिन आती है मक्खी, we say में in Hindi, uh, whoever eats the contaminated food is likely to get sick. और जैसे किसी कीचड़ के ऊपर से कोई मक्खी बिन बनाती किसी फूड के ऊपर आई और वो फूड अगर अपन ने खा लिया तो अपन को उससे बहुत डिजीजेस हो सकती क्योंकि उसके ऊपर पैथोजेंस आ गया है. So it is advisable to always keep food covered, avoid consuming uncovered items of food. Another example of carrier is the female anopheles. एक तो हमने एक कैरियर की बात करी लाइक हाउस फ्लाइज की, और एक दूसरा एग्जांपल है एनोफिलीज जो फीमेल मॉस्किटो होती है एनोफिलीज, which carries a parasite of malaria. जिससे क्या कॉज होता है अपन को मलेरिया. मलेरिया आप सबको पता है, मलेरिया मच्छरों फ्रॉम मॉस्किटो, और क्या नाम है एनोफेलीज, अ फीमेल मॉस्किटो से कॉज होता है जो मलेरिया की बहुत बड़ी साइट है. फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगी, और हमें एडीज फीमेल मॉस्किटो जो होती है उससे हमें डेंगी होता है. ठीक है. सो हाउ कैन वी कंट्रोल एंड स्प्रेड मलेरिया एंड डेंगी. आप हम मलेरिया डेंगी से कैसे बच सकते हैं, यू हैव टू टेल. ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. जितने भी मॉस्किटोज होते हैं ना वो सारे वाटर के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, वाटर के अंदर उनका जन्म होता है, वाटर के अंदर वो बर्थ होता है उनका. हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, वो भी स्टिल वाटर के अंदर और गंदे पानी के अंदर. सो अपन को हमारे आसपास में इन आवर नेबर्स कहीं पे भी वाटर कलेक्ट हुआ हुआ नहीं रहने देना चाहिए. इन कूलर्स के अंदर वी यूज कूलर्स. टायर्स ऑफ द इफ टायर्स ऑफ द योर कार्स योर एक्टिवास. फ्लावर पॉट के अंदर हो सकता है, इफ देयर इज एक्सट्रीम वाटर then water will be on the top of the pot and it can cause production of mosquitoes like Aedes and Anopheles, uh, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. अपन अपनी सराउंडिंग को क्लीन और ड्राई साफ सुथरी रख के मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को कम कर सकते हैं. ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स व्हिच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया. अपन मलेरिया को कैसे कम कर सकते हैं आप उसके मेजर्स लिख सकते हैं, आप सोच सकते हैं ऑफ कोर्स. अब ये कुछ डिजीजेस है, यू हैव टू लर्न, सॉरी बट यू हैव टू लर्न. Okay, some common human diseases caused by microorganisms. So like here are some examples which we have discussed. Tuberculosis जो बैक्टीरिया कॉज करता है और वो कैसे फैलती है, थ्रू एयर्स. एंड प्रिवेंटिव मेजर्स है, you can read them. Measles virus, air, chicken pox, and these all you have to learn. Okay, thank you. And yeah, you should, so I'll just give you the homework that you have to learn this. This is your homework you have to learn. Thank you. Now continuing with the chapter again, some of the common diseases affecting humans, their mode of transmissions and few general methods of prevention are shown in table 2.1. ये table 2.1 में अपन को बैक्टीरिया diseases बताई गई है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिजीज कॉज करता है, कहाँ से वो ट्रांसमिट हो सकती है, और उसका प्रिवेंटिव मेजर भी बताया गया. इन अदर एनिमल्स फॉर एग्जांपल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज. एक एंथ्रैक्स बहुत ही खतरनाक डिजीज है जो कैटल और ह्यूमंस में हो सकती है. कैटल मींस भेड़ बकरी के अंदर. फूड और माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरसेस. कोई फूड या फिर माउथ के अंदर कैटल्स के डिजीज हो जाती है वो भी वायरस से कॉज करता है. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. अब हम बात करेंगे
animals के अंदर several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human or cattle disease caused by bacterium, foot and mouth disease caused by virus. Disease causing microorganisms in plants. अब हमने पढ़ा animals का, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स का. सो अब प्लांट्स के अंदर कैसी डिजीज हो सकती है, ठीक है. अब ये अपने पहले ह्यूमंस पढ़ा, फिर एनिमल्स पढ़ा, अब प्लांट्स के ऊपर पढ़ रहे जा रहे हैं. ठीक, ओके. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज डिजीज लाइक इन प्लांट्स लाइक ऑन व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज एप्पल एंड अदर्स. इन सब पे अपन डिजीज कॉज हो सकती है. अ डिजीज रिड्यूस यील्ड्स ऑफ क्रॉप, ठीक है. So a disease reduce the yield of crops. Some such plant diseases, they can controlled by the use of certain chemical which kill the microbes. सो इधर आपके पास थ्री डिजीजेस है, लाइक प्लांट डिजीजेस, सिट्रस कैंसर जो बैक्टीरिया कॉज करता है एयर में, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो विद मोसैक ऑफ भिंडी, ठीक है, भिंडी ओकरा. ओके, अंडरस्टूड. ये सारी डिजीजेस है. अब एक मेन टॉपिक आएगा, फूड पॉइजनिंग. व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? Bujo, we have seen them. Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. वहाँ पे उसने बहुत खाया. On reaching home, he started vomiting and had to taken to a hospital. The doctor said that the condition could be due to food poisoning. ठीक है, और ये condition उसकी इसलिए हुई है क्योंकि उसको food poison हो गया है. Food poisoning could be due to consumption of food spoiled by some microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. Microorganisms अगर अपने food पे grow कर रहे हैं और अपन को uncovered रखा है तो उसके ऊपर बहुत toxic substances grow करेंगे and these make the food poisonous, और उससे जो food होगा वो poisonous बन जाएगा and serious illness, अपन को illness हो सकती है and even death. Okay. So it is very important that we preserve food item to prevent it from being spoiled. Okay, इसको spoiled होने से हमें बचाना चाहिए. Okay, so there is another topic, food preservation. I think food preservation, then nitrogen fixation, nitrogen cycle, and then we'll complete the chapter. So I think it is enough for a while. So I'll say a goodbye to you. Thank you. Till then, do like, share, comment, and subscribe to our channel. Thank you.